Hello everyone, welcome to study panel. This is Devendra Sejala from Kendriya Vidyalaya Drangadhara. In today's video, we shall start a new chapter of 5th maths and the name of the chapter is Can You See the Pattern? Dear students, in our 3rd class also we have learned something about patterns. In our 4th class also we have learned about patterns. Play with pattern was the chapter in our 4th class. In 5th class also we will learn something more about patterns. Now in this video, we shall learn turns and patterns, and the second topic is look for the pattern. Dear students, if you have not subscribed our channel, please click on the subscribe button and press the bell icon to stay updated. Let us start with the video. Now first here we can see, Isha, your skirt is beautiful. My mother made this pattern. See, these are the patterns on the skirt of Isha. Her mother has made it. I have seen the same block making a different pattern on a kurta. How was it different? See, here we can see these are the patterns on the skirt like this. Here the size of the pattern is bigger than the size of the pattern on the skirt. Now the second one is, on your skirt the rule of the pattern is one up, one down. Then this is repeated. Here we can see this is up, down, up, down. So the order of the pattern in the skirt of Isha is up, down, one up and one down. But in my brother's kurta, it is once up, then takes 1/4 turn every time. The rule is to repeat it 1/4 clockwise turn. See, in our previous class also we have learned about 1/4 turn, half turn, 1/3 turn, 1/6 turn. Here we can see the same pattern is drawn here, and in the next pattern it turns 1/4 anti-clockwise. Here it was at 12 o'clock. Now we can see here it is at 3 o'clock. See, we have to keep in mind a clock while doing the turns. 1/4, half, 1/3, any turns we have to keep in mind clock. Dear students, if you have not watched that video of turns, by clicking on the link here you can watch that video. Now this is 12 o'clock, then it turns clockwise 1/4, it is 90 degree at 3 o'clock. Again it turns clockwise 90 degree, then it is 6 o'clock, this is 9 o'clock, this is again 6 o'clock, and now it is repeating like this. So every time it turns 1/4 turn clockwise. Now let us move on to some more questions. Now you use these two rules to make patterns with this flower block and also make your own rules. So here one up, one down. We'll use this one. See, half turn. We'll do half turn. Half turn means, suppose if any object is at 12 o'clock, if it moves to 6 o'clock, this one will move to the 6 o'clock, then we can say that it has turned to a half turn. Now we'll do this one. This is the first example. Now we'll make half turn of this. Say this is the half turn. Half turn, dear students, we have to also remember here that half turn is 180 degree. Half turn is 180 degree. We have to keep in mind half turn is equal to 180 degree. Now again this will remain the same. Now we'll make half turn of this. See, this is the half turn. Again this will remain the same. One up, one down, up, down, up, down, up, down, like this. So this is a half turn. Now we'll move on to the 1/4 turn each time. Now we all know that 1/4 turn means it will move to, this is 12 o'clock, so this will move to 3 o'clock. Now this is 1/4 turn. Now अगर यहाँ पर हमारा 1/4 turn 3 पर आ गया, then our next 1/4 turn will be at 6 o'clock. So this is a 6 o'clock. Now this will move to 9 o'clock. Here we can see this is 9 o'clock, and this will remain as it is as 12 o'clock. Yes, and this is again moved to 3 o'clock. Like this we have to go 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock. Let me write for you so that it will be very clear for you. This is our, we can see this is 12 o'clock, this is 3 o'clock, this is 6 o'clock, this is 9 o'clock, this is again 12 o'clock, and this is again
3 o'clock. Like this it is moving. Here we can see this is 12 o'clock, this is 6 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock and 6 o'clock. Means it is moving like this here. Again from here it will go to here, then again it will move to here. So ये वाला image बनेगा like this it will move. And here we can see the image will go like this, then here, then like this, and then like this. So this is how these patterns are also known as clockwise turn. Clockwise means हमारा clock कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है. That is clockwise. Yes. Now we'll see some more turns and patterns. Look at this block. See, this is a block. Now here we are going to learn some rules about the patterns. We make three different rules to turn it clockwise and see the pattern. See, this is our first rule. Now यहाँ आपको students एक बात दिमाग में बिठा लेनी है. हमें घड़ी को दिमाग में रख के ही चलना है. कैसे घड़ी को? जैसे कोई चीज ये हमारा 12 o'clock है, ये हमारा 3 o'clock है, this is our 6 o'clock and this is our 9 o'clock. See, 12 से अगर कोई चीज 3 पर आती है तो हम लोग उसको कौन सा टर्न कहेंगे? 1/4 टर्न कहेंगे. यानी यहाँ से घूमकर कोई चीज आती है यहाँ पर, then we will say that it turns 1/4. It has made 1/4 turn. अब ये 3 पर जो है हमारी चीज 3 से मूव करके 6 पर आई, तब भी कौन सा टर्न होगा? 1/4 टर्न. यानी अगर हमारी ये चीज हम लोग मान के चलेंगे कि 3 पर थी और मूव करके कहां पर आ गई? 6 पर आ गई, then also it has made 1/4 turn. Now here also I would like to revise you. 1/4 turn is equal to 90 degree turn जो है हमारा. ये देखो यहाँ से लेके यहाँ जो एंगल बनेगा, ये हमारा कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा. अगर ये फिर हो गया, फिर ये जो 6 है, 6 से लेके 9 तक का जो टर्न हुआ, that is also 1/4 टर्न. ये जो है फिर 9 से लेके 12 का टर्न हुआ तो वो भी 1/4 टर्न हुआ. फिर अगेन 12 to 3, like this it is keep on repeating. जो है ये घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा. इस तरह से जो है ये टर्न्स जो है हमारे घूमते रहते हैं. Now one more thing here you need to understand that what does a clockwise means. clockwise का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर हम देखेंगे. clockwise का मतलब क्या होता है? जैसे पहले घड़ी में सबसे 12 के बाद क्या बजता है? 1 बजता है, then 2 o'clock, then 3 o'clock, then 4 o'clock. If any object is moving like this direction, then we can say that it is moving clockwise. It is moving क्लॉकवाइज. जिसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज बोलेंगे, क्योंकि जिस दिशा में क्लॉक मूवमेंट करता है उसी दिशा में ये मूवमेंट कर रहा है. दैट मींस वी कैन सी इट 1/4 टर्न क्लॉकवाइज हो रहा है. अगर ये उल्टी दिशा में मूव करेगा, सपोज यहाँ से लाइक दिस, इफ इट इज मूविंग, जो 12 पर था चीज वो टर्न होके 9 पर आ गया, तब भी 1/4 टर्न तो है ही, लेकिन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. यानी क्लॉक की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलेंगे. ठीक है. नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड रूल. फर्स्ट रूल क्या था? 1/4 टर्न क्लॉकवाइज, 1/4 टर्न क्लॉकवाइज. नाउ सी, here we can see, let me erase this one. Here you can easily understand with the help of example. See, this is, here we can see the 12 o'clock. Now if it will move to 3 o'clock, this is 1/4 turn. See, this is 1/4 turn. Again this 12 will come to the place of 6. This is again 1/4 turn. This is again 1/4 turn. Like this it will move on. Now the second rule is repeat it with half a turn. Half turn means 12 o'clock to 6 o'clock travel करेगा और 6 o'clock से वापस 12 o'clock तक travel करेगा. That is half a turn. If any object is at 12 o'clock and if it moves to 6 o'clock, then we can say it had made a half turn. Half turn is equal to 180 degree. 180 degree का एंगल बनता है. ये एंगल अगर दोनों का देखें तो स्ट्रेट एंगल हो गया यहाँ पर. This is 180 degree angle. Here also we can see this is our 12 o'clock, this is our 6 o'clock. So this image has totally inverted. देखो यहाँ पर पूरा क्या हो गया? ये जो फ्लावर पिंक वाला यहाँ नीचे आ गया है. That means it has made a half turn. अगेन ये 6 o'clock वाला ट्रैवल करके यहाँ से ऐसे आ गया ऊपर
12 o'clock पर आ चुका है. Like this it moves. Now see, we will understand this with the help of example. This is our 12 o'clock. See, 12 o'clock की जगह क्या आ जाएगा? अब 6 o'clock आ गया ना, 12 नीचे चला गया तो ये हाफ टर्न होगा. अगेन अगर हम लोग इसका हाफ टर्न करेंगे तो क्या करेंगे? अगेन 12 o'clock ऊपर आ जाएगा. So this is half turn clockwise. Clockwise means like this it is moving. This is clockwise. Yes. Now see, this is again half turn. Now we'll move on to the third rule. Repeat it with 3/4 turn. Now what does a 3/4 turn means? 3/4 turn means 12 पर जो चीज है वो पूरा घूम के 9 पर आ गई. दैट मीन्स 3/4 टर्न हो जाएगा. 3/4 टर्न जो है 270 डिग्री का होता है. 270 डिग्री. ये पहला वाला हाफ हो गया हमारा, कितना हो गया? 90 डिग्री. फिर ये दूसरा वाला हाफ हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया तीसरा वाला हाफ हो गया 90 डिग्री. तो ये तीनों को अगर ये टर्न यहाँ से पूरा किया है, यहाँ तक आया है, तो 270 डिग्री टर्न हो चुका है. यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं, ये इमेज है, यहाँ 12 o'clock है, वो यहाँ 3 को क्रॉस किया, 6 को क्रॉस किया, देन इट मूव्स टू 9 o'clock को जाके वो रुका है. तो देखो यहाँ पर ये 9 पर आ गया. ये जो फ्लावर यहाँ पर था वो 9 पर अभी दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना. इफ इट इज एट 9 o'clock then we can say that this object has moved to 270 degree or it has made a 3/4 turn. Like this we can do. यहाँ पर भी ऐसा एग्जांपल्स है. ये देखो, फिर यहाँ से होके यहाँ नीचे आ गया. अब इसका 3/4 टर्न कहाँ से होगा? यहाँ से घूम के ये आएगा, यहाँ पर आएगा. ठीक है ना. फिर इसका 3/4 टर्न क्या होगा? ये यहाँ से घूम के यहाँ 12 पर आएगा. ठीक है. अब देखो ये ऑब्जर्व दिस वॉच. ये वाला जो है ये यहाँ से 12 से घूम के यहाँ पर आएगा. दिस इज अ 3/4 टर्न. जो 12 पर था, 12 पर जो था सर्कल, वो सर्कल कहाँ, ये जो 9 यहाँ पर था उसकी जगह 12 आ गया. तो हम लोगों ने क्या किया, ये 12 पूरा घूम के यहाँ पर आ गया, तो 3/4 टर्न. अब ये 12 पूरा घूम के कहाँ जाएगा? यहाँ पर 6 की जगह आ जाएगा. दिस इज अ 6. दिस इज अगेन 3/4 टर्न. और एक इसका टर्न करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पर. देखो ये 3 पर आ गया. यहाँ पर हमारा जो है 12, 3, 6, 9 को मान के चलना है. देखो एक बार और कर लेंगे. ठीक है. अब ये हमारा 6 पर है ना, ये हमारा 12 पर है. 12 देखो घूम के पूरा 9 पर आ जाएगा. आ गया? देखो आ गया ना. ये 9 है हमारा और ये 12 यहाँ आ गया. अब ये घूम के कहाँ आ जाएगा? 6 पर जाएगा. तब इसको 3/4 टर्न मानेंगे. See again you can see here it has made 3/4 turn. Good. Now I think we are very clear till here. Now we'll move on. See, practice time. Now here some pictures are given for us. We have to solve it by our own. Let us start. See, from on the basis of these three we have to draw these last two pictures. Okay, this is a picture. Now we'll make a pattern. ये यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये लगभग 10 और 11 के बीच में यहाँ पर है. 10.5 हम लोग लिख देंगे घड़ी का टाइम, और ये आ गया 12 पर. अब 12 पर है, ये आ गया 1.5 पे. 1 और 2 के बीच में है. अब ये कहाँ आएगा? 3 पर आएगा. देखो ये घूम के आ गया 3 पर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अब ये वाला ले लेंगे, ये आ जाएगा 4.5 पर. Like this it has made. So we have to complete this pattern like this. Now see here we can see the one after that it has moved to 3. 3 पर गया, 3 से फिर वापस कहाँ चला गया? 1 पर चला गया. तो अब ये कहाँ पर जाएगा? वापस 3 पर जाएगा. और ये 3 पर जो है वो अभी कहाँ जाएगा? 1 पर आएगा. Like this we have to make this pattern. Now here in this triangle if we can see the first one dot is at the bottom, then dot is at the left side, then the one dot is at the right side. So now we'll repeat this one. So this dot will come to the downside. We'll make a 1/3 turn. See, downside आ गया dot. अब dot कहाँ जाएगा? यहाँ पर आएगा. देख लेते हैं. ये वाला dot यहाँ पर आना चाहिए. Like this it has come. यहाँ पर ये वाली साइड आ चुका है. Like this. Now here we can see this is our 6 o'clock. 6 o'clock के बाद ये टर्न होकर कहाँ गया? यहाँ पर 9 o'clock पे आया, फिर 12 o'clock पे आया. तो अब कहाँ आएगा? ये 3 o'clock पे आना चाहिए ना. Yes, it has to come to the 3 o'clock. और now it has to come to the 9 o'clock. So it will come to the now it will come to the 6 o'clock पर आएगा. Like this we have to do this activity. Now see this pattern. See here some pattern is given. The rule of the pattern is turning 45 degree each time. This is 0 degree.
and it has turned to 45 degree. Then again 45 plus 45, this is again 45, total 90 degree हो गया. This is again 45. Now we have to select which one will be correct. Actually, if we look at all these three options, this option will be the perfect one. So we'll write this option here. We will tick mark this option. Now, using the same rule, take it forward till you get the back what you started. इसको वहां तक लेके जाना है, शुरू करना है, 45 डिग्री टर्न घुमाते जाना है, कहां तक जहां तक हमने शुरू किया, यानी ये वाला इमेज नहीं आ जाता तब तक. Now let us start. This is the first. यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट हो गया 45 डिग्री. सेकेंड 45 डिग्री ले लिया हमने 4:30 वाला. 6 बजे वाला ले लेंगे. 6 बजे से थोड़ा ऊपर वाला ले लेंगे लाइक दिस. जहां तक ये दोबारा नहीं आता तब तक हमें वापस ही इसको लेके जाना है. लाइक दिस वी हैव टू डू. यस, ये यहां पर आ चुका है. लाइक इसी तरह ही यहां पर बन चुका है. now we'll move on to the third. उसको थर्ड को भी हम ये जितने बॉक्सेस दिए हैं पूरा खत्म करेंगे. देखेंगे थर्ड जो है कितना डिग्री टर्न हो रहा है. 45 डिग्री टर्न हो रहा है. 45 डिग्री CW मींस क्लॉकवाइज. ये आ गया. अब कहाँ आएगा, 4:30 बजे आ जाएगा 45 डिग्री. नाउ इट विल मूव ऑन टू 6 o'clock, then 7:30, then 9 o'clock, between 9 and 12, then it will move to 12 o'clock. Now see, the same image has come. ये वाला बॉक्स लास्ट वाला दिया है. Then we'll also cover this one like this. It is done. Now see here, the very interesting patterns we have to learn this all patterns. Some patterns are given below on the left side of the red line. See, this is the left side of the, this is the red line, this is the left side of the rule. For each pattern, write the rule. We have to also write the rules for these patterns. Then choose what comes next from the right side of the line and tick. Now here we are having two options. We have to choose the right option from these two options. Now here we can see this is our 12 o'clock. If you remember this, this is our 12 o'clock और ये है exactly जो है 45 डिग्री टर्न मारा है ये वाला जो है. फिर 45 डिग्री पर आकर 3 o'clock. अगर आपको याद है तो ये जो एंगल बन रहा है कहां से, 12 से लेके 3 तक, दैट इज 90 डिग्री. और ये वाला जो है ना ये एग्जैक्टली बीच में है. तो 45 ये वाला हो गया, 45 ये वाला हो गया लाइक दिस. सो 45 is equal to 90 degree like this. So we'll write the rule here. The figure is turning clockwise 45 degree each time. So 45 degree each time. तो अब ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा. So this is our correct answer. You can tick, you can also mark this answer in your textbook. Dear students, if you feel this video is useful to you, please do share with your friends so that they will also get benefit of this one. Now come to the second one. Now here we can see this is the picture. The pink one is here. The blue one is, this is our suppose 12 o'clock. So blue one का जो ये corner है अभी 3 o'clock पर आ गया है. फिर ब्लू वन का ये कॉर्नर है 9 o'clock. अगेन ये क्या हो रहा है, 45 डिग्री टर्न कर रहा है, ये 90 डिग्री टर्न कर रहा है. लेट अस सी दिस फिगर इज टर्निंग क्लॉकवाइज 90 डिग्री ईच टाइम. तो अब ये जो ब्लू वाला अब ऊपर आना चाहिए. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. अगेन ये 12 पर आ गया, फिर घूमेगा तो ये वाला फिगर रिपीट हो जाएगा, ये वाला फिगर रिपीट होगा. Now move on to the next question. Now this pattern is somehow it is looking somewhat a confusion. What kind of confusion we can see here? The confusion is, see this is a broken part. Here you can see. Here also you can see this is a part is it is broken from here. Now अगर इसको ध्यान से देखिए तो फर्स्ट टाइम तो है ये थोड़ा उल्टा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, फिर इसको खड़ा हो गया. So the figure is turning 90 degree each time. यानी this is 12 o'clock. फिर ये कहां पर आ गया, यहाँ घूम के आ गया 9 o'clock पे आ गया. फिर वापस कहां चला गया, ऊपर की साइड चला गया, यानी ये वाला फिगर बन गया 12 o'clock बन गया. अब फिर कहां जाएगा, ये फिर ये वाला बन जाएगा, कहां चला जाएगा, 9 o'clock पे चला जाएगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ये एक बार क्लॉकवाइज कर रहा है और दूसरी बार
एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है. Now this image, see, we have to keep in our mind the clock. This is 12 o'clock. ठीक है, 12 o'clock के बाद ये कहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया. 9 o'clock, 9 o'clock के बाद ये वाला कहाँ आ गया, 6 o'clock, then 3 o'clock, then again 12 o'clock. So this one is our correct answer. So let us see the rule. The figure is turning 90 degree anti-clockwise. 90 degree anti-clockwise. Like this, you have to also tick mark in your textbook also. Now, see, here some patterns are there and there is some mistake in this pattern. Mark that picture which is breaking the rules. Now see, these are the pictures and we have to mark which picture is breaking the rule. See, this is up, down, up. So this should be a wrong figure. So ये क्या हो जाएगा, down हो जाएगा. See, we will make. In this pattern, the sixth figure, this is our sixth figure. Sixth figure from the left is breaking the rule, so we'll correct it. इसको हम लोग correct कर देंगे. देखो हमने इसको correct कर दिया है. So this is our correct figure. So you can draw like this in your notebook. Now the second one, see, this umbrella, it is starting from 3 o'clock, then it is moving to 6 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock. अब कहाँ आना चाहिए, 6 पे आना चाहिए, उसकी जगह ये कहाँ चला गया, 12 पर चला गया. तो this figure is breaking the rule. So we'll write the sixth figure from the left is breaking the rule. 1 2 3 4 5 6. So we'll correct it. कहाँ पर 6 पर जाना चाहिए, चलो इसको 6 पर भेज देंगे. So this is 6 o'clock. बाकी जो ये है 9 पर है, this is correct. Now the third one is, see here the birds are given one up and one down. लेकिन यहाँ पर ये वाला bird जो है ये mistake कर रहा है, तो हम इसको सही कर देंगे. The second figure from the left is breaking the rule, so we'll make it a. This is the correct answer. Like this we have to draw. Now here you can see this is many students find this pattern very difficult, but here what we have to keep in mind, if you observe this figure very carefully, this brown color and it is in a circle shape. So all these brown colors are in a circle shape except this one. इसको छोड़ के सभी brown color जो है वो circle में है, तो this figure is wrong. Now what is the correct? The fourth figure from the left is breaking the rule. अगर यहाँ पर जो है circle हो जाए तो ये rule को maintain करेगा, तो यहाँ पर circle हमें draw करना है. Thank you so much. Thank you very much all of you. If you feel this video is useful to you, please do like, share and subscribe.